Hello my viewers, I'm your host Gurinder Singh and today I'm here with a very interesting video. In this video I'm gonna discuss about a cue card that is describe an old friend you got in contact with again, and in this cue card you have to say who he or she is, what he or she is like, how you got in contact, and at last explain how you felt about it. Guys, not only this, जो मैं आंसर आपको दूंगा आप एक आंसर 6 क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो और बाकी के क्यू कार्ड्स हैं 51 क्यू कार्ड दैट इज पर्सन हु अपोलोजाइज टू यू, फोर्थ क्यू कार्ड the same that I am doing now, that is describe an old friend you got in contact. 6th cue card energetic person, 17th cue card intelligent person, 19th cue card person who help, and 27th surprise to meet friend. Okay, now I hope that this will make you crazy. Guys, I have uploaded the video of jumbo cue cards जिसमें ऐसे ही क्यू कार्ड्स और भी है, मैं और उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा आपको, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद. नाउ इस क्यू कार्ड को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल इंट्रो. इंट्रो का मतलब ये नहीं होता कि आपने बताना है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ओल्ड फ्रेंड और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट्स द फ्रेंड्स मीन टू यू. आपने अपने के लिए एक इंट्रो स्टार्ट करनी होती है, जिससे होता क्या है कि एक तो 30-20 सेकंड्स जो है वो कवर हो जाते हैं इजीली, और सेकंड आपको एक बेस मिल जाता है कि आपने स्टार्ट कर लिया क्यू कार्ड और आपकी जो बाकी के ऑप्शंस है, बाकी की जो आपका कंटेंट है वो इजीली फ्लो में चलने लगता है. That is called the intro in speaking. Okay, now सबसे पहले मैंने बताया कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ. एक्सट्रोवर्ट मतलब कि ज़्यादा मैं जल्दी फ्रेंड्स बना लेता हूँ, ठीक है. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में सेटल्ड हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में सेटल्ड हैं. मैं यहाँ पे जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जिसका नाम है सरदीप. एंड मैं उसको तब से जानता हूँ जब हम छोटे थे. ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. ओके, सो हम इकट्ठे ही पढ़े हैं इन वन स्कूल. तो वो हमारे स्कूल का एक सबसे ब्रिलियंट बच्चा था बिकॉज वो पढ़ाई में भी अच्छा था, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, बिकॉज ही वॉज रियली एनर्जेटिक. बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था. एक्टिविटीज़ में उसको सबसे पहले ले लेते. फॉर एग्जाम्पल इन भंगड़ा, एनी काइंड ऑफ डांस, वो हमेशा हर एक्टिविटी में सेलेक्टेड ही था बिकॉज ही वॉज brilliant. He was a multi-talented person, so that's why he was a superstar of our class. इसी वजह से वो हमारी क्लास का एक सुपरस्टार था. इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर का है और दूसरों की हेल्प भी करता है. हमें जब भी स्कूल में कोई भी डाउट होती थी हम उसी से पूछते थे. एंड ही हैव नेवर स्पोकन विद एनीवन विद अ लाउड वॉइस. किसी से भी ऊंची आवाज़ में उसने बात नहीं की आज तक. मैंने तो नहीं देखा उसको किसी से भी ऊंची आवाज़ पे बात करते हुए. और अब बहुत टाइम से वो कनाडा में सेटल्ड है. और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा ही मेरे बर्थडे पे वो एग्जैक्टली एट 12 o'clock ही यूज्ड टू विश मी. लेकिन इस बार जैसे वो यहाँ पे नहीं था तो उसकी कॉल भी नहीं आई. आई गॉट अपसेट. मैं बहुत अपसेट हुआ यहाँ पे और मैं उसे अपने बर्थडे पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था. बट आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई सॉ हिम कि वो मेरे बर्थडे पार्टी पे आ गया फ्रॉम कैनेडा. This was a surprise for me. मैं एकदम उसको देखते ही रह गया. मुझे लगा कि कहीं मैं ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन that was true और हमने बहुत एंजॉय किया. We had a lot of fun. और यहाँ पे हमने लास्ट पे एक फ्रेज यूज़ किया that is there is not a word yet for old friends who've just met. कोई ऐसा वर्ड नहीं बना जो बताए कि क्या फील हो रहा है जो फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स अभी अभी मिले हों. सो दिस इज द फ्रेज दैट आई हैव यूज्ड एट लास्ट. सो आई होप गाइस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ yes, do not forget to smash the like button, and if you are new on my channel guys, subscribe it and press the bell icon so that you can get the latest updates. Now let's start with the sample answer. Well, I am an extrovert person and I have numerous of friends, from which some are living in India and mostly are settled in Canada. Here I would like to talk about my childhood friend. His name is Sardeep. He is one of the most intelligent friends of mine. Moreover, he is not only good in studies but also in sports and other activities. I remember when we were in school, he was a superstar of our batch because
He is a multi-talented person who I think can do anything. Not only this, he is extremely humble and a kind-hearted person. I have never seen him speaking loudly with anyone. He is always ready to help others. Nowadays, he is settled in Canada, but recently he gave me surprise by arriving at my birthday party. Honestly, he is the only person who wished me exactly at 12 on my birthday. And this time, as he was not here, so I was feeling low. However, when he suddenly arrived, I got stuck at that moment as I thought it's a dream. But at the end, we had a lot of fun and he made my birthday really special. At last, I must say that there is not a word yet for old friends who've just met. So viewers, here I end up with this video. I hope it will be beneficial for you, and if yes, do not forget to comment and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.